Hello, hello, hello. Welcome back. I hope you had a very good break. Okay. तो हमने रूल 27 पढ़ा, कंसिडरेशन नॉट होनली इन मनी. फिर हमने देखा रूल 28. रूल 28 हमने पढ़ा नहीं है, बट आई एक्सप्लेन्ड यू द प्रोविजन. At first you use open market value, then like kind and quality, cost plus 10%, reasonable means. अगर रेसिपिएंट उस ट्रांजैक्शन का पूरा आईटीसी ले सकता है तो जो इनवॉइस पे वैल्यू लिखा हुआ है दैट इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू. एंड देयर इज वन ऑप्शन आल्सो, you can use 90% of the sale price of the recipient as your value when you are supplying to your related person. चलिए ये सब प्रोविजन देखते हैं along with corporate guarantee का वैल्यूएशन. पर्सनल गारंटी पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू 0 रहेगा. दैट एनीवेज वी विल सी इन दी सीबीआईसी सर्कुलर, वो भी आपके सिलेबस में है. तो आइए पेज नंबर 71 पे. रूल 28, value in case of distinct or related persons. Careful, distinct or related persons other than agent. क्यों सर? बिकॉज एजेंट रूल 29 में कवर होता है. कौन सा एजेंट का बात कर रहे हैं सर हम लोग? यहाँ हम लोग बात करते हैं सोल सेलिंग एजेंट, वो जो अपने नाम पे बिलिंग कर रहा है ना, वो एजेंट का बात कर रहे हैं. Okay, first you will write here one. First method is open market value. फिर लिखेंगे second, if open market value is not available, then it will be the value of like, kind and quality. Goods or services of like, kind and quality. वो भी available नहीं है, तो if other methods are not applicable, then value will be in the following order: cost plus 10%, which is in rule 30. एंड फोर्थ वाला अदर रीजनेबल मीन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट जजमेंट मेथड, रूल 31. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लायर कैन ऑप्ट फॉर 31 बिफोर रूल 30. ये रूल 31 में लिखा हुआ है कि 31 कैन बी यूज्ड बिफोर रूल 30. ओके. नोट 1, इफ द गुड्स, सर्कल सर्कल, खाली गुड्स का बात कर रहा है, सर्विसेज का बात नहीं कर रहा है. If the goods are intended to be supplied as such by the recipient. Recipient कौन है? हम लोग का related person. If goods are intended to be supplied as such to the recipient, then at the option of the supplier, supplier की मर्जी, the value will be 90% of the price charged for the supply of like, kind and quality by recipient to his अनरिलेटेड कस्टमर. सर यहाँ लाइक, काइंड एंड क्वालिटी क्यों यूज किया? बिकॉज देखो, आज आप अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, अब उसी दिन रिलेटेड पर्सन वो थोड़े बेचा होगा, मतलब उसका लाइक प्रोडक्ट जो पुराना स्टॉक आया हुआ रहेगा वो पहले बेचेगा ना. तो दैट्स व्हाई द लॉ सेज लाइक, काइंड एंड क्वालिटी इन दिस. So can you use 90%? Yes, you can use 90% of the price which your recipient is charging to unrelated customer. Note 2, provided further that where recipient is eligible for full ITC. ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सर. हाँ, अगर नहीं दिया हुआ है प्लीज डोंट अज्यूम कि रेसिपिएंट फुल आईटीसी ले सकता है. क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा. The value declared in the invoice shall be deemed to be open market value. जो भी आपने invoice पे लिखा that will be deemed to be open market value. अभी ये नया point है. However, there is one exception to this. The value of supply of service by
a supplier to a recipient who is a related person by way of providing corporate guarantee to any banking or financial institution on behalf of the said recipient. हम लोग गारंटी दे रहे कि बैंक अगर पैसा वो कंपनी नहीं भरेगा तो वी कैन, it shall be deemed to be 1% of the amount of such guarantee or actual consideration, whichever is higher. Whichever is higher. So even if you can claim full ITC, can you write the value as 0 for corporate guarantee? क्या आप 0 लिख सकते हो वैल्यू में? The answer is no. You can never write 0 for corporate guarantee. Even if recipient can take full ITC, तो भी आपको ये 1% या एक्चुअल कंसिडरेशन विचेवर इज हायर पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है सर. इसके ऊपर ना एक सर्क्यूलर है, यू बेटर राइट हियर. नाउ रीड सर्क्यूलर ऑन पेज. कैन समवन हेल्प मी? लास्ट में ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखे थे ना, वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, बस उसके नीचे था. कैन समवन टेल मी द पेज नंबर? 83. थैंक यू सो मच. ऑफ टेक्स्ट बुक. चलिए अब 83 पे चलते. वो पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी का सर्क्यूलर देखेंगे. तब तक आप लोग रूल 28 भूल चुके होंगे, फिर आके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए कम टू पेज नंबर 83. ओके, पेज नंबर 83 में आपको सर्क्यूलर दिखाई देगा 204, वेरी न्यू सर्क्यूलर, 27 अक्टूबर 2023 को ही रिलीज हुआ था. क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू पर्टेनिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी इन जीएसटी. क्या टैक्स लगेगा बिटवीन फॉर पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी? देखो हम लोग को आंसर तो पता है, बट वी विल हैव टू राइट द क्लैरिफिकेशन एज गिवन बाय सीबीआईसी. क्वेश्चन कैसे आएगा सर? केस स्टडी क्वेश्चन. दे विल आस्क यू दिस इश्यू एंड आपको लिखना है क्लैरिफिकेशन. चलिए लेट्स सी. Whether the activity of providing personal guarantee by the director of a company to bank or financial institution for sanctioning of credit facility to the said company without any consideration will be treated as a supply and whether it will attract GST. पहली बात, can you tell me whether it will be treated as a supply? जब डायरेक्टर गारंटी दे रहा है कंपनी के लिए टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इज इट अ सप्लाई? हाँ, ए सप्लाई है. अगर सप्लाई नहीं होता तो उसका वैल्यू 0 कैसे डिराइव करते? ए सप्लाई है. सप्लाई कैसे है सर? शेड्यूल 1 सप्लाई टू रिलेटेड पर्संस इज रिगार्डेड एज अ सप्लाई. सप्लाई है. उसके बाद वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू 0 होगा, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि कुछ कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं कर सकते. कुछ कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं कर सकते तो 0 हुआ वैल्यू. अब 0 के कारण जीएसटी विल बी 0. बहुत ध्यान से आंसर अच्छे से लिखना है इसका. आप पढ़िए ये खुद, यू रीड इट. आप खुद पढ़िए.
Red. So what if director is charging some fee or consideration? Whether GST would be applicable? Even when RBI is saying no, he is charging some consideration. Whether GST would be applicable? The answer is yes. Then GST will be applicable. तो बेसिकली आरबीआई ने इसीलिए कहा है कि डायरेक्टर शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द कंपनी. ओके, व्हाट इफ अब आप डायरेक्टरशिप दे रहे हो क्योंकि आपने कंपनी सेल कर दिया है, पर कुछ टाइम के लिए वो गारंटी रखना जरूरी है, नहीं तो बैंक लोन पूरा पेमेंट करना पड़ेगा. अब आप डायरेक्टरशिप दे चुके हो पर थोड़े दिन के लिए आप कंटिन्यू कर रहे हो बैंक गारंटी देना, तब जो कंसिडरेशन चार्ज करोगे वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल? The answer is yes. Obviously, if you are charging a consideration, then obviously GST would be applicable. ऐसा होता है सर? हाँ होता है. When people sell the company, जो डायरेक्टर था ना वो अपना पूरा शेयर्स बेच दिया है, बट वो जो खरीदा है वो बोलता है कि थोड़े दिन आप गारंटी दो, हम लोग दूसरा गारंटर प्रोवाइड कर रहे हैं. Okay. कॉर्पोरेट गारंटी, लेट्स सी इट टुगेदर. चलिए देखते हैं. Whether the activity of providing corporate guarantee by a person on behalf of another related person or by holding company for sanction of credit facility to its subsidiary company, to a bank or financial institution, even made when made without any consideration, will be treated as taxable supply of service, and if taxable, what will be the value of supply of such service? यहाँ लिखिएगा, यहाँ मिसिंग है सच सर्विस. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सच सर्विस? Okay, let's see the clarification. Where corporate guarantee is provided by holding company for its subsidiary company, those two entities also fall under the category of related persons. Hence, the activity of providing corporate guarantee by a holding company to a bank or financial institution for securing credit facilities for subsidiary, even when made without any consideration, is also to be treated as a supply of service as per Schedule 1. Hence, in such a case, taxable value will be determined as per Rule 28, consequent to Rule 28(2), for determining taxable value of such service between related person in respect of providing corporate guarantee, irrespective of whether full ITC is available or not. You will have to use the taxable value under Rule 28. Can you tell me what is the taxable value under Rule 28? वो तो नहीं याद है सर. 1% of guarantee amount. तुम लोग को 1% याद रहेगा. प्लीज डोंट फॉरगेट 1% ऑफ व्हाट. प्लीज, हाँ तुम लोग को 1% याद रहेगा, ट्रस्ट मी, बट ये याद नहीं रहेगा क्या चीज का 1%. सो बी केयरफुल. 1% of guaranteed amount or actual consideration whichever is higher.
or actual consideration, whichever is higher. तो क्या प्लान्स आज क्लास के बाद? आई हर्ड कि आप लोग सप्लाई से लेके वैल्यू सारा रिवाइज करने वाले हैं. ओ टेस्ट है, ओके. कितना रेट लगेगा सर? आउट ऑफ सिलेबस, डोंट टास्क आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस. 28. ओके, लेट्स सी. चलिए अब आ जाइए. 29 इज वेरी इजी. नाउ थिंग्स आर इजी. अभी पूरा डिस्कशन ही इजी है. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा. ओ उससे पहले कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑन पेज 71? लेट्स सी. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 सब सॉल्व करो. देन we'll write the answers. You find the answer for all 1, 2, 3, 4. Now अभी डिस्कस करें. चलिए. फर्स्ट केस, is employer employee related person? Yes, employer and employee are related persons. क्या 2400 एक्सेप्ट होगा? नहीं. कॉस्ट का कुछ काम है? नहीं. ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है? यस.
So the open market value 2700. The value will be 2700. चलिए पहले ये लिखते हैं. Answers. For the first one, you'll write as per section 15 of CGST Act 2017, comma, employer and employee are related persons. Full stop. As per Rule 28 of CGST Rules 2017, comma, value will be open market value, that is 2700. That is 2700. ठीक है. मोस्ट ऑफ यू सेड 2700. एक ही रॉन्ग आंसर आया था मेरे को, बाकी सबने 2700 ही कहा. सेकेंड वन, एक ब्रांच बैंगलोर में, एक ब्रांच मुंबई में. बैंगलोर ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है 42,000 पे. ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है. मुंबई ब्रांच इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. और दो रॉन्ग आंसर इस बार, बाकी सब करेक्ट है. एंड द विनिंग आंसर इज, तीन रॉन्ग आंसर. एंड द विनिंग आंसर इज 42,000 because amount charged on the invoice will be deemed to be open market value because the recipient can claim full ITC. Okay, correct. चलिए. As per Rule 28, comma, if recipient can avail full ITC, comma, then value charged on invoice is deemed to be open market value, that is value will be 42,000. That is value will be 42,000. Okay, third one. थर्ड वन थोड़ा ट्रिकी है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड वन दिखाई दिया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. हाँ सर, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर कंट्रोल्ड बाय सी लिमिटेड. ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर रिलेटेड पर्सन्स. अ प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय ए लिमिटेड फॉर 10,000 टू बी लिमिटेड. तो ये तो हम लोग इग्नोर ही करेंगे जब तक फुल आईटीसी नहीं मिलेगा. ये तो नहीं होगा. और लास्ट में दिया हुआ है कैन नॉट टेक फुल आईटीसी, तो ये 10,000 तो पक्का कंसीडर नहीं होगा. कॉस्ट तो लास्ट यूज करते हैं, अभी नहीं यूज करेंगे. रेगुलरली सोल्ड फॉर 12,000. रेगुलरली सोल्ड फॉर 12,000, दिस इज योर ओपन मार्केट वैल्यू. 12,000 आ गया बिकॉज दिस इज द प्राइस एट विच यू आर सेलिंग इट. बी लिमिटेड हैज सोल्ड. बी लिमिटेड हैज सोल्ड. देखो हम लोग वैल्यू कर रहे ए और बी के बीच में.
यहां बी का सेल प्राइस बताया है. बी लिमिटेड हैज सोल्ड like kind and quality for 13,000 at the same time. B limited has sold. क्या हम लोग B लिमिटेड का सेल प्राइस यूज कर सकते हैं A और B के बीच के ट्रांजैक्शन के लिए? The answer is yes. हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 90% से और मिलेगा 11,700. तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू 12,000 या 11,700 एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर. ये आंसर होना चाहिए था. No one gave me both the options. You should have given both the options. You can't say whichever is better when the question is asking about value. अगर लिखा हुआ रहता, ओ 1% सेंट, वो देखा नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया था दैट टाइम. ओके, सो the two people have given it. Now, so 12,000 or 11,700 at the option of the supplier. याद रखना ये 90% वाला ऑप्शन में आता है. हाँ, लॉ ठीक से पढ़ना, नोट 1 नोट 2, नहीं तो भूल जाओगे. then you will go by open market value only. नहीं, ये ऑप्शन में आता है because you are using 90% of the sale price of your recipient. Clear with this? Yes. नहीं, you read note. Those who think open market value यूज होगा, नोट 1 4 बार पढ़ना आज क्लास के बाद, और ऑप्शन ऑफ द सप्लायर सर्कल करना. चलिए आंसर लिखते हैं. अगर क्वेश्चन में बोला होता चूज द वन विच इज बेनिफिशियल, तो तुम लोग क्या आंसर देते? देन आवर आंसर विल बी 11,700. वैसा क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है. हाँ क्या सर? हाँ, both the type of questions have been asked in exam. चलिए लिखते हैं. Answer to question number 3. As per rule 28, comma, the supplier has an option to determine value based on 90% of sale price of recipient, ब्रैकेट में लिखना बी लिमिटेड, और ओपन मार्केट वैल्यू, full stop. Therefore, comma, value would be, next line, A, 90% of 13,000, that is 11,700, or B, open market value, that is 12,000 at the option of supplier. At the option of supplier. At the option of supplier. Last case. First of all, is child a related person? हाँ, child is a related person. तो क्या होगा वैल्यूएशन? ओपन मार्केट वैल्यू है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है उसमें. There's only one possibility out of the entire question, and that one possibility is
कॉस्ट प्लस 10%, बाकी कुछ डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो चलिए, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। एक वन आंसर वाज 400, दैट इज रॉन्ग। कॉस्ट प्लस 10% करना पड़ेगा, बट अदरवाइज करेक्ट आंसर्स। चलिए, हाँ, व्हाई नॉट? Supply to related person is a taxable supply covered under Schedule 1, free of cost. Like JK Shah classes providing coaching to JK sir's son and daughter, whether GST will apply? Yes, obviously yes. चलिए, हाँ, वहां तो ओपन मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सप्लायर विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम चाइल्ड, सर। अरे नहीं कलेक्ट किया है तो जेब से भरना पड़ेगा, इतना क्यों तुम लोग टेंशन लेते हो? यू फोकस ऑन पेइंग जीएसटी एज अ सप्लायर। चलिए, एज पर सेक्शन 15 of CGST Act 2017, child is a related person. Full stop. If OMV or like, kind and quality is not available, comma, then value will be as per rule 30, that is cost plus 10%. Therefore, comma, value will be 400 plus 10% equals to 440. Equals to 440. Done. I will give you a list of section number and rule numbers at the end of GST. ये रूल नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन का रूल नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। डन? ओके, rule 29 deals with agent. Which agent are we talking about? We are talking about schedule 1 agent. सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? डू यू रिमेंबर कि शेड्यूल 1 में प्रिंसिपल एंड एजेंट खाली गुड्स ही कवर होता है? याद आया? इफ यू सी द लैंग्वेज ऑफ रूल 29, आपको सिर्फ गुड्स ही मिलेगा। या you will not find services, because
द लॉ इज वेरी क्लियर दैट जहां भी एजेंट यूज हो रहा है that is schedule 1 agent and not just merely a commission or a broker. नहीं, हम लोग शेड्यूल 1 एजेंट का बात कर रहे हैं जो अपने नाम पे बिल कर रहा है। अब उसके लिए वैल्यूएशन क्या होगा? अब बताओ, पहले हम लोग कौन सा का वैल्यूएशन फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं? प्रिंसिपल से एजेंट वाला ट्रांजैक्शन या एजेंट से कस्टमर वाला? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, विच वन आर वी ट्राइंग टू फाइंड इन द रूल्स? विनिंग आंसर इज फर्स्ट वन, क्योंकि दिस इज विदाउट कंसिडरेशन। कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया, इसी का तो वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, क्योंकि दिस इज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस जीएसटी इज एप्लीकेबल। बट कितने वैल्यू पे लगेगा वो अभी हम लोग सीखेंगे। नाउ लॉ हैज सेड या तो ओपन मार्केट वैल्यू यूज करो या 90% ऑफ प्राइस एट विच एजेंट इज सप्लाइंग। 90% of price at which agent is supplying to customer. Agent is supplying to customer. कुछ लग रहा है सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्नड इन रिलेटेड पर्सन? हाँ, तो यहां दो ही ऑप्शन है और उसके बाद तो सेम ऑप्शन है, एक कॉस्ट प्लस 10% एंड लास्ट वाला है रीजनेबल मीन्स। तो ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर करोगे या 90% ऑफ प्राइस एट विच एजेंट इज सप्लाइंग टू कस्टमर? एक चीज मिसिंग है विच वॉज देयर इन रिलेटेड पर्सन। कैन समवन टेल मी वो क्या चीज है जो मिसिंग है? एक तो वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का खुद का सप्लाई यूज कर सकते हैं, वो नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट, एग्जैक्टली राइट, आईटीसी। रिलेटेड पर्सन में अगर रेसिपिएंट कैन टेक फुल आईटीसी, इनवॉइस वैल्यू इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। याद आया? Is that line there in agent? The answer is no. एजेंट में वो ऑप्शन है ही नहीं। एजेंट में हमेशा ओपन मार्केट वैल्यू यूज करना पड़ेगा या 90% ऑफ सेल प्राइस। आप इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से नहीं जा सकते। लॉ हैज नॉट प्रोवाइडेड इट। आई एम नॉट श्योर व्हाई लॉ हैज डन सो। इवन आई एम ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम अ नंबर ऑफ इयर्स कि क्यों गवर्नमेंट ने ऐसे किया। इससे अच्छा कि कोई भी प्राइस अलाउ कर देता। बट ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि इट इज being valued correctly and not at a higher or lower price. But I think जब भी प्रिंसिपल एजेंट को बिल करेगा ना, वो ट्राई करेगा कि हाई या लो पे बिल नहीं करे, ओपन मार्केट वैल्यू पे ही बिल करे। टू माय अंडरस्टैंडिंग एनीवेज ही विल बिल एट ओपन मार्केट वैल्यू, बट लॉ में लिखा हुआ है वो फुल आईटीसी वगैरह का पॉइंट एजेंट में अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज लिखा हुआ ही नहीं है। आर यू क्लियर? ओके, गो अहेड, रीड दिस पार्ट। पढ़िए, आप खुद पढ़िए। पढ़ा? ओके, नाउ इफ यू नोटिस, रूल
30 and 31 are not there. 29 के बाद सीधा 31 है, because rule 30 is nothing but cost plus 10% and rule 31 is reasonable means, which we have already discussed. Now the question is, how will you value betting, gambling, horse racing? Betting, gambling, horse racing. And how will you value? Yeah, obviously, it is at the discretion of supplier. Lottery. दोनों का अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है. डोंट मिक्स इट अप इन एग्जामिनेशन. बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग का गवर्नमेंट ने कहा है 100% ऑफ बेट अमाउंट. जितना बेट किया दैट विल बी दी वैल्यू. 10 लोगों ने 100 रुपीज बेट किया, वैल्यू विल बी 100 फॉर ईच. समझ में आया? ओके. नॉर्मली दीज केसेस आर कॉट, नहीं तो कोई जीएसटी पे नहीं करता है फॉर इलीगल बेटिंग. लॉटरी में गवर्नमेंट हैज गिवन अ बेनिफिट, बिकॉज डू यू नो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लॉटरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑन विच दे रियलाई. वो लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लॉटरी रन करते हैं. हाँ, स्टेट गवर्नमेंट रन लॉटरीज होता है. गवर्नमेंट लॉटरी चला रहा है. एक तो होता है स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लॉटरीज, मतलब कोई प्राइवेट वाला लॉटरी चला रहा है. और होता है स्टेट गवर्नमेंट रन लॉटरीज, गवर्नमेंट खुद भी लॉटरी चलाता है. सर हाँ, नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट खुद भी लॉटरी चलाता है ताकि पैसे कमा सके. बेसिकली नथिंग मोर देन दैट. अब लॉटरी के लिए देयर इज वन बेनिफिट. लॉटरी के लिए द वैल्यू विल बी face value of the tickets into 100 divided by 128, or basically price notified by government. लॉटरी का प्राइस भी नोटिफाई कर सकता है गवर्नमेंट. फेस वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है, फेस वैल्यू 10 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपीज ऐसे लॉटरी का रहता है. या प्राइस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट. इफ दे आर कंडक्टिंग ऑनलाइन लॉटरी तो प्राइस नोटिफाई होता है. whichever is higher. Can someone tell me ये क्यों 100 by 128 किया है? Government is treating the amount of lottery ticket inclusive of GST. समझ में आया? But compare this with betting, gambling and racing. क्या bet amount is considered inclusive of GST? No. This is where institute will try to test you. और May 24 RTP में I will add that question in the question book. इतना मस्त question दिया था on just this, where they tried to confuse you with this. Betting, gambling, lottery में 100% of the bet amount you can never treat it as inclusive of GST. But lottery में law में लिखा हुआ है कि you will treat it as inclusive of GST. Are you clear with this? Okay. अब सर व्हाट अबाउट ड्रीम 11? ऑनलाइन मनी गेमिंग का क्या? ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए है रूल 31B एंड 31C, जो हम लोग ऑनलाइन गेमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे. इज इट सर? हाँ, वो अलग से हम लोग ऑनलाइन गेमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट वो हम लोग ऑनलाइन गेमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे. आई हैव नॉट केप्ट इट हियर. जब वो चैप्टर आएगा आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट ड्रीम 11, what can happen, how it can happen, what will be the value, what will be the taxation, everything. but वो अलग है क्योंकि उसको गेम ऑफ स्किल ज्यादा बोला जाता है कंपेयर्ड टू गेम ऑफ चांस. ए, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन चांस एंड स्किल? Anyways, I will explain you it in detail when we go to online gaming. Okay, ठीक है. तो चलिए लेट्स रीड इट, और ये ना हम लोग यहाँ लिख लेंगे.
बिकॉज वेन यू आर रीडिंग फ्रॉम ICI मॉड्यूल समटाइम तो आपको लगेगा ये नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, रूल 31B 31C हम लोग अलग से पढ़ेंगे ऑनलाइन गेमिंग चैप्टर में. फर्स्ट लेट्स रीड 31A. वैल्यूएशन इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग. हाँ, वी विल डिस्कस ऑनलाइन गेमिंग इन डिटेल जब आएगा, तब अभी नहीं. Lottery run or authorized by state government. Value will be 100 by 128 of face value of the ticket or 100 by 128 of price notified in official gazette by organizing state. ये जब they run the lottery ना, they notify the price. ये PRICE है, PRIZE नहीं है. केयरफुल. प्राइस ऑफ द टिकट. PRIZE नहीं है. लॉटरी प्राइस नहीं है, प्राइस है. विच एवर इज हायर. ओके. बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ बेट और अमाउंट पेड टू टोटलिसेटर. टोटलिसेटर कौन होता है? जो पूरा हॉर्स रेस ऑर्गेनाइज करता है. हॉर्स रेस जो ऑर्गेनाइज करता है उसको बोलते हैं टोटलिसेटर. ओके. अब आप यहां एक लाइन लिखेंगे. नाउ सॉल्व question 8 on page, I think it is 81, but एक बार चेक कर लेना. Solve question 8 on page 81. इसमें I have to give you help because it talks about एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड. मैंने अभी तक आपको एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड नहीं पढ़ाया है, तो आई विल टेक यू थ्रू इट. आप एक एक एडजस्टमेंट का मेरे को आंसर बताते जाना, सो दैट यू विल फील कि आप खुद ही कर रहे हो. आई विल नॉट गिव यू द आंसर बिफोर यू टेल मी द आंसर. तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर आंसर बताऊंगा. ओके. कम टू पेज 81. पेज 81. नाउ one very important thing is, यहां हेडिंग में आप लिखेंगे एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड स्लैश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है LUT. दोज हु आर इन नॉन IDT बैकग्राउंड, डोंट वरी, हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे रिफंड चैप्टर में, एंड यू विल लर्न इट मच बेटर देन दोज हु आर वर्किंग इन IDT. वो पक्का गारंटी. Export under bond or LUT. Give a hyphen. No GST. नो GST. नहीं लगता है सर? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना GST के. सर एक्सपोर्ट विथ GST भी कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्सपोर्ट विथ GST भी कर सकते हैं, विदाउट GST भी कर सकते हैं. सर विथ GST करेंगे तो नुकसान नहीं होगा? नहीं, रिफंड चैप्टर में सीखेंगे. विथ GST करते हो ना तो भी फायदा मिलता है, विदाउट GST करते हो तो भी फायदा मिलता है. हाँ हाँ सर, डिफरेंस क्या है? टाइम लगेगा, बहुत दूर है अभी. ओके, सो यू नो वन थिंग, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और LUT, यू आर गिविंग अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कि मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा. तो अगर आपने एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया है कि मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है एक्सपोर्ट करो, कंजम्पशन बाहर है, GST भरने की जरूरत नहीं है. बट टेल मी वन थिंग, एक्सपोर्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई. ओके, चलिए. नाउ one trick is, whenever the question is one page or more, first find out कि क्या कैलकुलेट करना है और GST रेट क्या है, वो देख लो, फिर क्वेश्चन पढ़ना, यू विल सेव टाइम. पहले हम लोग देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है और GST रेट क्या है, सो दैट while we are reading the question हम लोग को हर चीज का आंसर पता चल जाए. तो लास्ट में नॉर्मली ये दिया हुआ रहता है नोट.
ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। टेल मी, अगर ये लाइन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट को आप क्या कंसिडर करोगे? है नहीं इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट, बट फिर भी sir, obviously exclusive. If this line is given, please don't play with institute. Wherever applicable. GST rates of supply of bulk drug is 2.5, 2.55%. तो bulk drug which is goods 5% पे है, और drug development service is 9, 9, 18, 18% drug development service. हम लोग को क्या फाइंड करना है? GST payable for January. That means our entire focus would be कि जनवरी में कितना पेएबल होगा. Let's see. अब आप यहां से लेके ए तक पढ़िए और बताइए जनवरी में ए का ट्रीटमेंट क्या होगा. एक आंसर आ गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या जनवरी पे एडवांस पे जीएसटी लगेगा? हाँ सर, जीएसटी लगेगा. सेकंड, जीएसटी रेट क्या होगा? 18% होगा. वेदर इट विल बी सी प्लस एस और आईजीएसटी? सर इट विल बी सी प्लस एस एट 18%. कोई टेंशन नहीं. मतलब 1 mark is in your pocket. This is a 8 और a 10 mark question, और हर पॉइंट का एक एक मार्क है. प्लस गिविंग द राइट कंक्लूजन विल ऑल्सो हैव अ mark. So I think it is 8 mark question. Okay. बी पॉइंट पढ़ के देखिए और बताइए जनवरी में क्या करेंगे. Very few right answers. Most of the answers are wrong. Most of the answers are wrong. Winning answer is no impact in January. क्यों? टाइम ऑफ सप्लाई याद करो. क्या डेट ऑफ पेमेंट इज कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स? नहीं, डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर नहीं करते हैं तो कोई इम्पैक्ट जैन में नहीं आएगा. एडवांस देखो, सर्विसेज के केस में ना टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हेन सर्विस एडवांस इज रिसीव, बिकॉज डेट ऑफ पेमेंट इज कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. बट फॉर गुड्स इंडस्ट्री डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. तो जब एडवांस मिलेगा, क्या आपको एडवांस के दिन टैक्स के मंथ में टैक्स पे करना है? द आंसर इज नो. सो देयर विल बी नो इम्पैक्ट इन जनवरी कैलकुलेशन. ओके, सम ऑफ यू गेव मी करेक्ट आंसर बट मेजॉरिटी वर रॉन्ग. चलिए, लेट्स सी इफ यू कैन टेल मी द आंसर फॉर थर्ड वन.
ओके, एक रॉन्ग आंसर आया अभी तक, बाकी सब करेक्ट। एक तो फोर्थ वाले का आंसर दे दिया है थर्ड के बजाय। ओके, थर्ड वन, जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड 5% रेट लगेगा C+S बिकॉज इट इज गुड्स। बल्क ड्रग्स का रेट 5% दिया हुआ है एंड इट विल बी ऑब्वियसली टैक्सेबल इन जैन। ओके, कैन यू टेल मी डी का आंसर? हाँ, बस अभी लिखे थे हम लोग कि एनी एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और एलयूटी विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। इसका मैं नोट लिखा दूंगा अच्छे से, हिंदी आंसर। ठीक है, and those who are in IDT they will know export without payment of GST very well. Okay, E, can you tell me the answer for E? Okay, applicable C+S 18% is the right answer. Now the fun begins. Can you tell me the answer for F? Let's see what do you do for F. Interesting point है. Okay, first everyone agrees 5% tax लगेगा. अभी ये दोनों एजेंट है, एजेंट ने आगे बेचा है 60 और 50 लाख में. कैन आई से 60 और 50 लाख इंटू 90%, दिस विल बी द वैल्यू एंड 5% जीएसटी चार्ज होगा. So what we have done is applied rule 29. But please understand, अभी तो आपने जस्ट रूल 29 पढ़ा और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. एग्जामिनेशन में यू हैव ऑलरेडी रिटन 4 पेपर्स, यू हैव स्टडीड 1 डे बिफोर द एग्जाम, एंड फिर लैंग्वेज कि वो लोग आगे सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हेन यू विल गेट द राइट आंसर. समझ में आया? ओके. हाँ, पर यहाँ कुछ ओपन मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. वी विल डायरेक्टली अप्लाई दिस. एंड वी हैव आल्सो मेड वन assumption कि एजेंट इज बिलिंग इन हिज ओन नेम, नहीं तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं होगा. ओके, बिकॉज इट्स वेरी क्लियरली सेइंग दैट वो एजेंट्स रिटेलर को सप्लाई करते हैं, तो वी कैन फेयरली टेक दिस पोजीशन. ओके, कैन यू टेल मी द आंसर फॉर जी? हाँ, आईजीएसटी रहेगा because both are outside Delhi. Most of you are correct. एक wrong answer है अभी. Yeah, in fact एक ही wrong answer है अभी तक. Okay, winning answer is 30 lakh into 5%.
आईजीएसटी लगेगा। क्यों सर? Recipient cannot take full ITC, so you can't accept 15 lakh. If you cannot accept 15 lakh, you'll have to go by open market value. Open market value is 30 lakh. Hey, are you clear? Yes. ओके सर, इसमें आईसीएस अलग से लिखना है क्या? हाँ। कैसे पता चलता है कि अलग से लिखना है? इफ द जीएसटी रेट इज गिवन सेपरेटली टू यू इन द क्वेश्चन, तो आपको भी सेपरेटली फाइंड करना है। अगर जीएसटी रेट एक ही दिया हुआ है तो यू कैन डू वन कैलकुलेशन। ओके, नाउ द गुड पार्ट इज इसका आंसर मेरे पास अवेलेबल है। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस आंसर। यहां लिखेंगे आप रेफर पेज डैश ऑफ नोटबुक। यहाँ लिखेंगे रेफर पेज डैश ऑफ नोटबुक एंड यू आर गोइंग टू राइट दिस। इसमें नोट्स भी है। फर्स्ट यू राइट द मेन पार्ट, देन आई विल शो यू द नोट्स प्रॉपर्ली। थोड़ा बैक पेन है तो थोड़ा आई हैव केप्ट वन। आप लिखिए, नेक्स्ट वीक तक आई विल बी रेडी। लिखिएगा अच्छे से। दी ओनली पॉइंट इज सब चीज का आंसर मैं दे देता, बट क्वेश्चन बुक में ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए हैं। एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस ना हर चैप्टर के राइट एंड प्रैक्टिस, यू विल रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। Yeah, IGST na, we are charging IGST only. When we supply to agent, we will charge IGST because both are outside Delhi.
डन गुड नहीं ओके 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 राइट गुड डन आई विल चेंज द स्क्रीन नाउ ओके लास्ट नोट ठीक है गुड गुड ओके आई विल चेंज द स्क्रीन नाउ चलिए नाउ वी हैव अ वेरी लाइट डिस्कशन बट इंटरेस्टिंग डिस्कशन इस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं हाँ 6.45 come to page number 73 page number 73 you will find rule 32 determination of value for certain supplies now government has given some optional methods कि अगर आप चाहें तो ये मेथड्स यूज कर सकते हैं टू डिराइव वैल्यू टोटली 4 स्पेसिफिक सेक्टर है और एक वाउचर का थोड़ा कुछ बोला हुआ है बाकी in this rule 32 there are only 4 sectors
which have been provided an optional valuation mechanism. पहला sector which you are going to write on page 73, आप रोमन 1 लिखेंगे और सेंटर ऑफ द पेज में लिखेंगे एयर ट्रैवल एजेंट। एंड एयर ट्रैवल एजेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में आप लिखेंगे डोमेस्टिक बुकिंग्स, दूसरे पार्ट में लिखेंगे इंटरनेशनल बुकिंग्स। अब डोमेस्टिक बुकिंग्स, गिव अ डाउन एरो, वैल्यू इक्वल्स टू 5% ऑफ बेसिक फेयर, एंड बेसिक फेयर को एक एस्ट्रिक दीजिएगा। अब आपको क्या लगता है, एजेंट का कमीशन 5% होगा क्या? 5% ऑफ बेसिक फेयर? सर नहीं सर, कम होगा। नहीं सर, ज्यादा हो सकता है। नाउ दैट्स व्हाई government has given you this option that you can pay tax based on value 5% of basic fare. अगर आप ज्यादा कमाते हो तो will you prefer this option? Say suppose your commission is 8%, then yes, अगर आपका commission 8% है ना, you will prefer this valuation mechanism so that you can charge less to your customer as GST, and customer भी खुश रहेगा तो आप भी खुश रहोगे। दूसरा केस है where your commission is less than this, अगर आप 1% कमीशन पे काम करते हो, then in that case will you prefer GST, paying GST on 1 or 5? Obviously sir, I'll go with 1. So these are optional mechanisms provided, जहां गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन दे रहा है, चार ही सेक्टर को ऑप्शन दिया है कि आप लोग ये बेनिफिशियल मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको नहीं चाहिए तो एनीवेज इट्स फाइन। अब बताइए कमीशन ज्यादा कहां रहता है, डोमेस्टिक बुकिंग में या इंटरनेशनल बुकिंग में? ऑब्वियसली इंटरनेशनल बुकिंग। तो यहां आप लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू 10% ऑफ बेसिक फेयर, 10% ऑफ बेसिक फेयर, एंड बेसिक फेयर को एक एस्ट्रिक दीजिएगा। फॉर द एस्ट्रिक यू विल राइट अ सेंटेंस, बेसिक फेयर means the fare on which commission is generally payable to the agent, to the agent, to the agent. Okay, let me tell you something about this industry कि कैसे वर्क होता है। आपने एयर टिकट तो बुक किया है, बट हैव यू सीन द ब्रेकअप ऑफ द चार्जेस? नाउ यू नो हाउ इट वर्क्स। एक तो जब भी एयरलाइन आपको चार्ज कर रहा है, there will be one basic fare. Say suppose this basic fare is 3,000. Then there will be fuel and other charges. Or say suppose this is 2,000 rupees. Then there will be, ये तो किसी किसी एयरपोर्ट में लगता है क्यूट फी। दिस इज नॉट क्यूट विच यू अंडरस्टैंड। सर्च करना ऑनलाइन कि क्यूट का फुल फॉर्म क्या होता है। क्यूट फी इज ऑल्सो चार्ज्ड, से सपोज 400। फिर यूजर डेवलपमेंट फी एंड पैसेंजर सर्विस फी भी लगता है।
यूजर डेवलपमेंट फी एंड पैसेंजर सर्विस फी इज चार्ज बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। हाँ हाँ, जो एयरपोर्ट रन कर रहा है ना, जैसे प्राइवेट एयरपोर्ट है तो अदानी और जीएमआर ग्रुप वो लोग कलेक्ट करेंगे, और अगर पब्लिक एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लोग कलेक्ट करते हैं यूजर डेवलपमेंट फी या पैसेंजर सर्विस फी। पर हम लोग ना एयरपोर्ट पे जाके ये पेमेंट नहीं करते, एयरलाइन वाले ही कलेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज। तो से सपोज दिस इज 1000। फिर आपको दिखाई देगा एयरपोर्ट टैक्सेस। एयरपोर्ट टैक्सेस कुछ नहीं है, एयरपोर्ट टैक्सेस इज दी जीएसटी ऑन दिस। इसको 18% से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 180, दैट इज एयरपोर्ट टैक्सेस, द टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन यूजर डेवलपमेंट फी एंड पैसेंजर सर्विस फी। फिर आता है जीएसटी, जीएसटी एट 5%। अब जीएसटी एट 5% इज एप्लीकेबल ऑन ऑल अदर थिंग्स, मतलब यूजर डेवलपमेंट फी पे तो ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है, बाकी ये 5400 जो है ना, इस पे 5% विच इज 270, और ऐसे टोटल प्राइस बन जाता है 6850। दिस इज योर टिकट प्राइस। तो आपको जब टिकट प्राइस दिखाई देता है तब आपको 6850 दिखाई देता है, बट उसका ब्रेकअप होता है। अब नॉर्मली एजेंट्स को कमीशन मिलता है इस पे, फ्यूएल पे कमीशन नहीं मिलता है नॉर्मली। पर अगर क्वेश्चन में बोला है कि एजेंट इज गेटिंग नॉर्मली कमीशन ऑन दीज थ्री, देन व्हाट विल यू फॉलो? देन प्लीज डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चन, प्लीज। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कमीशन इज नॉर्मली पेएबल ऑन दिस, देन इन दैट केस अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर मेथड। सो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। ये एक सैंपल एयर टिकट है, और आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि नॉर्मली एजेंट को कमीशन किस पे मिल रहा है। यू विल कंपेयर दैट विथ 5% और 10%। अगर पूछा है विच एवर इज लोअर विच इज बेनिफिशियल, तो आप वो बताओगे, नहीं तो दोनों ऑप्शन में जीएसटी कैलकुलेट कर देना कि रूल 32 में क्या होगा और नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या होगा। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, ग्रेट। नहीं नहीं नहीं, लगता है ऑल फ्यूएल आप अलग से लिखने से ये मतलब नहीं है कि एयरलाइन इज सेलिंग यू एविएशन टर्बाइन फ्यूएल। ऐसे तो ओला लिख देगा इतना डीजल का और इतना रेंटिंग का। नहीं, प्रिंसिपल सप्लाई इज एयर टिकट। एनीवेज, कमिंग बैक, पीपल से सपोज आई वांट टू गो टू यूएस। आप प्लीज गो अवे सर, हो गया, हम लोग भी थक चुके हैं, 12 बज रहा है हम में भी और टाइम में भी। तो नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू गो टू यूएस लेटर। अब सी, आई हैव एक्सचेंज फॉरेन करेंसी $5000 and say suppose the price is 80, I have kept it for simple calculation, टोटल 4 लाख रुपीस मैंने एक्सचेंज कराया है। टेल मी वन थिंग, विल बैंक चार्ज मी कमीशन फॉर एक्सचेंजिंग $5000 इंटू और 4 लाख रुपीज इंटू $5000? द आंसर इज यस। तो बैंक ने मुझे चार्ज किया से सपोज कमीशन, कमीशन वॉज 3000, तो जीएसटी कितने पे लगेगा? सर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन 3000, इस पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, बैंक्स ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू पे जीएसटी ऑन सम अदर मेथड्स। इज इट सर? हाँ, पहला मेथड तो है कि वो लोग कमीशन पे डायरेक्टली 18% जीएसटी पे कर सकते हैं। ये पहला मेथड है कि जो कमीशन चार्ज किया उस पे 18% चार्ज कर दो। पर बहुत टाइम क्या होता है, बैंक विल नॉट शो दिस कमीशन एट ऑल। वो लोग क्या करेंगे, 80 में आपको दे रहे हैं और उन्होंने खरीदा होगा 79 में, तो वो लोग दिखाएंगे ही नहीं आपको कि वो लोग कमीशन चार्ज कर रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है. They will not tell you that commission is 3,000. What they will do is they will price it at 80 and they will buy it at 79. अब most of the highly traded currencies के लिए आरबीआई रेफरेंस रेट देता है. हाँ क्या सर? हाँ. किसी को पता है आरबीआई रेफरेंस रेट किस वेबसाइट पे मिलता है? आरबीआई हर हाईली ट्रेडेड करेंसी के लिए 4 या 5 करेंसी है जिसपे आरबीआई रेफरेंस रेट रिलीज करता है ऑन अ डेली बेसिस और ऑन ट्रेडिंग, जो हॉलीडे नहीं है. करेक्ट, FIBIL इज द वेबसाइट. नहीं, FADIA नहीं है, FIBIL इज द FBIL. वेट, आई विल शो इट टू यू बेटर. तुम लोग देख ही लो. This is the website FBIL where they release it. Now once you go to, दिख रहा है रेफरेंस रेट? सो 4 ही करेंसी के लिए दे डिक्लेयर रेफरेंस रेट. एक यूएसडी, एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एक यूरो एंड लास्टली जापानीज येन. सो फॉर दीज 4 दे डिक्लेयर रेफरेंस रेट्स. सो आरबीआई का जो रेफरेंस रेट आता है, say suppose the RBI reference rate is 79 and this is being sold at 80 rupees. हाँ, वो थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है इसमें. 79 and that is 80 rupees. Then government has said value will be difference between RBI rate and transaction rate into number of units. Difference between RBI rate and transaction rate. Difference between RBI rate and transaction rate. Whichever is higher, we'll have to take it first. 80 minus 79 into what were the number of units of foreign currency. The number of units of foreign currency was 5,000. So 1 rupee into 5,000 comes to 5,000. So you can take the value as 5,000 or what commission you have charged. It is at your option. You tell me which one will you prefer, 5,000 or 3,000? Sir, obviously I'll prefer 3,000. But कभी कभी क्या होता है, कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है कि कमीशन चार्ज कर रहे हो. So what bank started doing is they stopped charging commission. In fact, they increased the rate at which they are going to sell it to the consumer. So ये 3,000 नॉर्मली अवेलेबल ही नहीं रहता है. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप यूज करोगे, बट अगर रियल लाइफ में ये होता ही नहीं है. रियल लाइफ में यही एक मेथड, फर्स्ट मेथड ये. अब से सपोज आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है क्योंकि यू सॉ खाली 4 करेंसी का है. बट प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर इंस्टीट्यूट किसी और करेंसी का रेफरेंस रेट दे रहा है, प्लीज डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चन ओनली कि इस करेंसी का आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं होता है. You don't do all that, people. That's why I don't show it to you, but फिर भी one of you will ask, so I showed it to you. Otherwise, they will give you in the question. Now, अगर RBI reference rate available नहीं है, then the value will be 1% of amount exchanged. In this case, can you tell me how much is the amount exchanged? In our case, what was the amount exchanged? Correct, 4 lakh rupees. So 4 lakh into 1%, which comes to 4,000. So अगर RBI rate available है, तो difference between RBI rate into number of units. अगर RBI rate available नहीं है, तो 1% of the transaction amount. Can you tell me what is the significance of 1%? What is the underlying assumption of government? Government यहाँ क्या assume कर रहा है? Exactly right. Yeah. Government is assuming that this is the commission which bank will normally charge.
ठीक है. If none of the currencies is INR, if none of the currencies is INR, then in that case, you will pay GST in dollar terms or euro terms. ऐसा हो सकता है क्या? You are exchanging dollar and euro in India. Yes, very well possible. Say suppose you import from US, so you pay a lot of dollar, but you export to Europe, so you get lot of euros. So instead of euro into INR and dollar into INR or INR into dollar, आप डायरेक्टली यूरो से डॉलर कन्वर्ट कर सकते हो. अगर आप ऐसा कर रहे हो वेयर नन ऑफ द करेंसीज इज आईएनआर, तो वैल्यूएशन कैसे करोगे? क्योंकि आईएनआर का अमाउंट तो है ही नहीं. तब गवर्नमेंट ने कहा convert both into INR, convert both into INR, and lower of the two you multiply with 1%. Convert both into INR and lower of the two you multiply with 1%. Is this lower a benefit given by government which you are happy to see कि government इतना अच्छा कब से हो गया कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि दोनों को कन्वर्ट करो, लोअर ऑफ द टू इंटू 1%. गवर्नमेंट इतना अच्छा कैसे हो गया? नाउ let me tell you, there will not be much difference between both in INR. Why? There is something called as arbitrage. अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा ना, तो क्या होगा? पीपल विल स्टार्ट डूइंग सच ट्रेड्स एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. इसीलिए ऐसा, मतलब गवर्नमेंट लिखा है लोअर, बट ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, ये लोअर भी बहुत कम डिफरेंशियल रहता है बिटवीन दीज टू. मतलब आप डॉलर को भी आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, यूरो को भी आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल. अदरवाइज देयर विल बी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज. क्लियर विद दिस? हाँ, यू विल कन्वर्ट बोथ इनटू आईएनआर और उसके बाद लोअर करके. ठीक है, ओके. हाँ, कन्वर्जन विल बी, अभी लॉ में दिया हुआ नहीं है कि कौन से रेट पे कन्वर्ट करना है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है आरबीआई रेफरेंस रेट पर. सर फिर रियल लाइफ में क्या करते हैं? ट्रस्ट मी, जितना मैंने आपको सिखाया है ना अभी तक, ये सब में से कुछ भी रियल लाइफ में यूज नहीं करते. रियल लाइफ में जो यूज करते हैं ना, वो दूसरा ऑप्शन है जो भी लॉ में आप पढ़ोगे अभी, उसको बोलते हैं स्लैब रेट्स, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल. क्योंकि स्लैब रेट्स में ना, यहां जो आपको 1% दिखाई दे रहा है, स्लैब रेट्स में दैट इज 0.1% इन सम केसेस. तो रियल लाइफ में ये कुछ यूज नहीं होता है. अगर आप किसी भी बैंक ऑडिट में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू लर्न स्लैब रेट्स आफ्टर दिस. पहले मैं आपको ये ऑप्शन लिखा दूंगा, फिर स्लैब रेट वाला ऑप्शन लिखाऊंगा. All banks and authorized dealers in India use slab rates because it is easy. Second, it is very very beneficial compared to these methods. सर ये डिलीट ही कर देना चाहिए था. आई अग्री पीपल, पर ये ना सर्विस टैक्स से गवर्नमेंट लेके चल रहा है. दिस इज अ बैगेज. ठीक है, आई विल नॉट कमेंट टू मच. रिकॉर्डेड लेक्चर है. गवर्नमेंट इज ऑलवेज गुड. चलिए, लेट मी मेक यू राइट कि जो अभी ये पढ़ा है, एंड आई विल मेक यू राइट स्लैब रेट. फिर एक कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेस्ट है. ओके, चलिए. रोमन 2, मनी चेंजिंग सर्विसेस. मनी चेंजिंग सर्विसेस, लॉ में इसको मनी चेंजिंग सर्विसेस ही बोलते हैं. आप लोग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी भी लिख सकते हैं. मनी चेंजिंग सर्विसेस. नेक्स्ट लाइन. A
ऑप्शन 1 आरबीआई रेफरेंस रेट्स, आरबीआई रेफरेंस रेट्स। दो कॉलम होंगे, इक्वल साइज, केस, वैल्यू। केस 1, if RBI reference rate is available and one of the currencies is INR and one of the currencies is INR, वैल्यू में लिखेंगे ओपन ब्रैकेट डिफरेंस बिटवीन आरबीआई रेट and transaction rate close the bracket into number of units of foreign currency. Second one, if RBI reference rate is not available and one of the currencies is INR, is INR. Now what would be the value अगर RBI रेफरेंस रेट नहीं है तो? कुछ याद आ रहा है? 1% correct of the transaction amount. 1% of the transaction amount. That is amount exchanged. Third, if none of the currencies is INR, if none of the currencies is INR, if none of the currencies is INR, then open bracket, lower of, correct, both the currencies in INR, close the bracket, into 1%, into 1%. ये है ऑप्शन 1. अब आप लिखेंगे बी, दिस इज व्हाट इज यूज्ड इन रियल लाइफ. ऑप्शन 2 स्लैब रेट्स, सब यही यूज करते हैं, स्लैब रेट्स. स्लैब रेट्स में दो कॉलम होंगे. पहला कॉलम होगा अमाउंट एक्सचेंज्ड, दूसरा होगा वैल्यू. अमाउंट एक्सचेंज्ड एंड दूसरा कॉलम होगा वैल्यू. अमाउंट एक्सचेंज में आप लिखेंगे when the amount exchanged is
up to rupees 1 lakh. When the amount exchange is up to rupees 1 lakh. Now, value will be 1% of amount exchanged, minimum 250. Minimum rupees 250. ये तो सेम है सर, 1%। तो हाँ 1% सेम है, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे कम होते जाएगा रेट। जितना ज्यादा अमाउंट एक्सचेंज करोगे ना उतना कमीशन कम होते जाता है। यही चीज स्लैब रेट्स में दिखाया गया है। इट इज ऑपोजिट ऑफ इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। Second, when the amount exchanged is more than 1 lakh, but up to 10 lakh. But up to 10 lakh. Now I am writing dash. यहां कुछ आएगा, अमाउंट आएगा जो आप मुझे बताएंगे, प्लस 0.5% of amount in excess of rupees 1 lakh. Plus 0.5% of the amount in excess of rupees 1 lakh. पहले 3 आंसर्स गलत, 4th आंसर करेक्ट, 5th आंसर गलत, 6th 7th 8th करेक्ट, 9th रॉन्ग, 10th करेक्ट, 11th रॉन्ग, 12th करेक्ट। सिंपल मैथमेटिक्स है पीपल। ओके, 1 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसके लिए 0.5% लगेगा। तो फर्स्ट 1 लाख के लिए कितना लगेगा? फर्स्ट 1 लाख के लिए लगेगा 1 लाख इंटू 1% जो होता है 1000। अब 1000 वर्सेस 250 विच इज हायर? 1000, क्योंकि ये तो मिनिमम है ना। सम ऑफ यू सेड 250, वो सब गलत। थर्ड, when the amount exchanged is more than rupees 10 lakh. More than rupees 10 lakh. Dash plus 0.1% of the amount in excess of rupees 10 lakh. In excess of rupees 10 lakh. Sorry, first 1 lakh का 1% plus 9 lakh का 5%, that comes to 5,500. 5,500. So which one do you think is the best, slab rates or
RBI reference rate, any day slab rates, people, because अमाउंट एक्सचेंज छोटा मोटा अमाउंट तो वो फॉरेन घूमने जाते हैं तब होता है, बट ज्यादातर बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं, एंड दिस 0.1% is quite low compared to 1%. This is the most used method in the entire industry. Okay, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, नोट, once an option is selected, comma, it cannot be changed for a financial year. For a financial year. नहीं चेंज कर सकते. ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 एक बार चूज कर लिया, फाइनेंशियल ईयर के लिए चेंज नहीं कर सकते. सर वो एयर ट्रैवल एजेंट वाला ट्रांजैक्शन वाइज कर सकते हैं क्या? हाँ, एयर ट्रैवल एजेंट वाला कभी भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. पर ये स्लैब रेट या आरबीआई रेफरेंस रेट दोनों में से एक, once you select it, you can't change for a financial year. It's not allowed. हाँ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर सकते हैं. ऐसा मतलब कभी कभी इतना इनोसेंट क्वेश्चन आ जाता है ना आप लोग से, लिखा हुआ है कैन नॉट चेंज इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन आता है कैन यू चेंज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. डन डन. आर यू रेडी टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन मनी चेंजिंग सर्विसेज? यस. ओके, पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आफ्टर टीचिंग यू वन मोर टॉपिक, ताकि आप ये भूल जाए, देन इट विल बी फन. एक और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पढ़ा देता हूं, देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस. चलिए, रोमन 3 लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है क्या? नहीं सर, हाँ अभी तो नहीं. नाउ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, लेट मी टेल यू, देर आर 2 ऑप्शंस. दो पॉलिसीज बहुत फेमस है और वो समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस. एक होता है वेयर यू पे अ प्रीमियम ऑफ 5,000. आई विल नॉट टेक योर एग्जाम्पल, आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ, नहीं खुद का भी नहीं लूंगा, मिस्टर बी. नहीं, ए का तो ले ही नहीं सकते. प्रीमियम 5,000 है. इफ मिस्टर बी डाइज इन 20 years, नेक्स्ट 20 years, 5,000 प्रीमियम है हर साल का, तो फैमिली को मिलेगा 10 लाख. इफ मिस्टर बी डज नॉट डाई, देन कुछ नहीं मिलेगा. तो अगर वो नेक्स्ट 20 years में मर गया, 10 लाख मिलेगा फैमिली को. नहीं मरा तो कुछ नहीं मिलेगा. सो विच इज बेटर, डाइज और डज नॉट डाई? Some of you are saying die. मतलब for 10 lakh you will kill a person.
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिसी, इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस या रिस्क बेस्ड पॉलिसी भी बोलते हैं, जहां खाली रिस्क कवर हो रहा है। अगर वो इवेंट हुआ, दैट इज अगर वो डेथ इवेंट हुआ तो फिर पैसे मिलेंगे, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज फर्स्ट वन। दूसरा पॉलिसी होता है वेयर प्रीमियम अमाउंट विल बी 20,000 और वहां इफ द पर्सन डाइज, if the person dies in 20 years 10 लाख मिलेगा। if he does not die तब भी 10 लाख प्लस बोनस मिलेगा। ये तो अच्छा है सर, पर यहाँ प्रीमियम भी ज्यादा है। यहाँ आप 5,000 पे कर रहे हैं, यहाँ आप 20,000 पे कर रहे हैं। सर सेकंड केस में ये क्यों मिलता है? बिकॉज ये सेकंड केस को हम लोग बोलते हैं यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, या एंडोमेंट भी बोलते हैं, या इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी 5,000 तो रख लेता है रिस्क कवर के लिए, और 15,000 ना इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर देता है। एंड डू यू अग्री, जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो नॉर्मली बढ़ेगा, एंड LIC इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स। यस सर, ऑब्वियसली। तो ये 15,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पैसा बढ़ जाता है, तो 10 लाख प्लस बोनस मिलता है इवन इफ द पर्सन डज नॉट डाई। ए आर यू क्लियर विद दिस? सो आपको क्या लगता है, क्या इन्वेस्टमेंट पोर्शन पे GST लगना चाहिए? The winning answer is no. That's what is said in the law. खाली रिस्क पोर्शन पे GST लगेगा, इन्वेस्टमेंट पोर्शन पे GST नहीं लगेगा। इज इट सर? यस। तो अगर रिस्क बेस्ड पॉलिसी है तो उस पे पूरे पे GST लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसी है तो इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगेगा और रिस्क पे लगेगा। आर यू क्लियर विद दिस? यस, ओके। इट इज एज गुड एज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। बताइए, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, विल यू पे GST? It is merely an investment in securities. Same way, लाइफ इंश्योरेंस का जब ऐसा पॉलिसीज लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसी है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट पोर्शन पे GST नहीं लगता है, खाली रिस्क पोर्शन पे लगता है। क्लियर विद दिस? ओके, लेट मी मेक यू राइट दिस नीटली, फिर हम लोग इसका भी सम देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, फर्स्ट पार्ट में मेरे को बहुत कम स्पेस चाहिए, अबाउट 1/4, एंड बाकी का 3/4 स्पेस मेरे को चाहिए सेकेंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे रिस्क बेस्ड पॉलिसीज, ब्रैकेट में लिखना ओनली रिस्क कवर, give a down arrow, value equals to total premium charged। जितना भी प्रीमियम चार्ज किया है सारे पे GST लग जाएगा। टोटल प्रीमियम चार्ज्ड। अब सेकेंड पार्ट पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसीज। इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसीज मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। याद रखना, इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसीज, इसका ये मतलब नहीं कि खाली इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का बात कर रहे हैं, मेन सप्लाई क्या है? रिस्क कवर करना, लाइफ रिस्क कवर करना। सो वो लोग खाली इन्वेस्टमेंट नहीं इश्यू कर सकते, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। अब
यहां दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे इफ द ब्रेकअप ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट पोर्शन is informed to the policyholder at the beginning. At the beginning. If the breakup is informed, breakup बताया हुआ है, पॉलिसी इशू करते समय बताया कि इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना रिस्क की तरफ जाएगा। तो दो पार्ट होगा यहाँ, रिस्क पोर्शन लायबल टू जीएसटी, इन्वेस्टमेंट पोर्शन नो जीएसटी, नो जीएसटी। अब सेकेंड पार्ट, if the breakup is not informed to policy holder at the beginning। अब बताओ, अगर ब्रेकअप दिया हुआ ही नहीं है तो क्या पूरे पे टैक्स लगना चाहिए और समथिंग लेस? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, क्या पूरे अमाउंट पे टैक्स लगना चाहिए या समथिंग लेस? ऑप्शन 2 वही गवर्नमेंट ने दे रखा है यहाँ। अब यहां गवर्नमेंट ने कहा है फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यहां दो पार्ट होंगे, फर्स्ट ईयर प्रीमियम वैल्यू विल बी 25% of the premium charged, 25% of the premium charged, 25% of the premium charged. Can you tell me what is the thinking behind 25% of premium charged? You are absolutely right. 1/4 is being used towards risk and 3/4 is being invested. Clear with this? 1/4 towards risk and 3/4 is towards investment. अब सोच के बताओ कहां सर्विस एलिमेंट ज्यादा होता है? फर्स्ट ईयर जहां डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ता है, प्रपोजल जाता है, हेल्थ चेकअप होता है, एक्चुरी, एक एक्चुरी वो सब चीज चेक करता है, स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग सबका अलग अलग प्रीमियम डिसाइड करता है, या सब्सिक्वेंट ईयर जहां खाली चेक से पेमेंट करते रहना है? कहां सर्विस एलिमेंट ज्यादा है, फर्स्ट ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर? सर ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में ज्यादा सर्विस एलिमेंट है, बिकॉज बहुत सारा चीज फर्स्ट ईयर में होता है। इसीलिए यहां देखिए, अब आप लिखेंगे सेकेंड पार्ट में सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम, सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम, give a down arrow, value equals to 12.5% of the premium charged, 12.5% of the premium charged, 12.5% of the premium charged. That means the law is assuming that 12.5% is going towards risk, that is around 1/8
is going towards risk and balance 7/8 is being invested. Okay, last thing, note, in case of single premium annuity policy, in case of single premium annuity policy, comma, value will be 10% of premium charged. Value will be 10% of premium charged. Does someone know what is a single premium annuity policy? ये क्या होता है single premium annuity policy? ठीक है, लेट मी आस्क यू, एज अ यंगस्टर, ठीक है, लमसम पेमेंट किया, एक बार आपने प्रीमियम भरा, फिर आपको एन्युटी में पैसे मिलते रहेंगे. ओके, एज अ यंगस्टर यू विल प्रिफर सिंगल प्रीमियम और 20 ईयर प्रीमियम? क्योंकि सिंगल प्रीमियम बहुत बड़ा अमाउंट रहता है. सर 20 ईयर प्रीमियम हम लोग धीरे धीरे पे करते रहेंगे, उसके बाद आ जाएगा. बट एज अ ओल्ड एज पर्सन जिसके पास अच्छा कैपिटल पड़ा है, ही विल प्रिफर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, जहां वो एक बार पूरा पैसे दे देगा और बोलेगा मेरे को इंस्टॉलमेंट में देते रहना, मेरा खर्चा चलते रहेगा. अब सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी में आपको क्या लगता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा या ज्यादा रिस्क होगा? पूरा प्रीमियम तो वो ऑलरेडी भर चुका है. नहीं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा पैसा तो वो ऑलरेडी भर चुका है, हम लोग को खाली पार्ट में देना है. दो उसका एज ज्यादा है, बट पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्शन ज्यादा रहेगा. इसीलिए गवर्नमेंट हैज गिवन अ वेरी लो रिस्क पोर्शन ऑफ 10%. कैन यू टेल मी, अगर ये लाइन नहीं रहता तो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी में कितने पे टैक्स भरना पड़ता, कितने परसेंटेज पे भरना पड़ता? अगर ये लाइन नहीं रहता ना, तो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी में इतने पे भरना पड़ता. This is a big benefit which is provided to single premium annuity policy. Clear with this? Yes. ओके, अब हम लोग खाली सम्स करेंगे, नया टॉपिक नहीं सीखेंगे, और एक टॉपिक बच गया इसमें, वो बाद में सीखेंगे. अभी सम्स करेंगे. अभी आप ऊपर रोमन 2 से पहले यहां लिखना रेफर नोट्स फॉर एग्जाम्पल. अभी हम लोग पहले मनी चेंजिंग सर्विसेज का एक एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. एंड ट्रस्ट मी, ये एग्जाम्पल इज एज गुड एज अ ब्रेक. हाँ क्या सर? हाँ हाँ, मनी बैक पॉलिसी ये सब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है, क्योंकि वो रिस्क भी कवर करता है, इन्वेस्टमेंट भी मिलता है. ओके, कम टू योर नोट्स, और आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल फॉर मनी चेंजिंग सर्विसेस. Hey people, example is as good as a break now. Do you agree? Instead of reading a new provision, which is better? ऐसे तुम लोग बोलता है बुद्धू बना रहा, नहीं, इतना अच्छा से प्लानिंग करके मैं सब चीज सीक्वेंस में रखने की कोशिश करना पड़ता है. इन नोट्स, नोट्स में लिखना है एग्जाम्पल फॉर मनी चेंजिंग सर्विसेस. मनी चेंजिंग सर्विसेस ए नोट्स में लिखना है. ये नोटबुक, अभी नोटबुक में लिखे ना, रेफर पेज डैश फॉर एग्जाम्पल, तो मनी चेंजिंग सर्विसेज का एग्जाम्पल लिख रहे हैं. ओके, मिस्टर ए is a forex dealer, full stop.
The total commission earned from all the following transactions is rupees 3 lakh. Compute GST at 18% under section 15. सेक्शन 15 मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, कमीशन पे 18% पे कर दिया, कॉमा आरबीआई रेफरेंस रेट एंड स्लैब रेट्स, तीनों में आपको जीएसटी फाइंड करना है. ए, $1,000 exchanged at rupees 85 per dollar. ब्रैकेट में लिखेंगे आरबीआई रेट 83.5. बी, 10,000 GBP, Great Britain pound, exchanged at rupees 98 per GBP. Then 80,000 euros exchanged at rupees 90 per euro. Enjoy, have fun, waiting for your answers.
Okay, I've got one answer. 54,000 160974 and 3231. $14,994 जीएसटी कैलकुलेट करना है. ओके, आरबीआई रेफरेंस रेट का 2 आंसर है. टू टू 98 3285. वेल्स 765. सॉल्व करें. चलिए, आप लिखेंगे सॉल्यूशन. कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेएबल. First one is section 15, which is very simple. GST equals to 3 lakh into 18%, which comes to 54,000. ये तो डायरेक्ट हो जाता है. फिर सेकेंड वन, आरबीआई रेफरेंस रेट्स. आरबीआई रेफरेंस रेट्स में you'll have to do it separately. आप तीनों को कंबाइन नहीं तीनों को कंबाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज तीनों का मेथड अलग हो सकता है. और हर कस्टमर आपके पास जब आता है तब आप उसको you calculate GST for that customer. You don't calculate GST in bulk. तो आप हर कस्टमर के लिए अलग अलग GST डिटरमाइन करते हो. A will be 85 minus 83.5 into 1000, and value will be 1.5 into 1000 will be 1500. B, 10,000 into 98 into 1%, because RBI रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा 9,800. करेक्ट. एंड C, 80,000 into 90 into 1%. I think this will be 72,000. करेक्ट. बस कैलकुलेशन बता देना है.
72, 9, 81, 82, 83, 500, or 83, 300. 83, 300 will be value and GST at 18% will come to 14,994. तो RBI रेफरेंस रेट का विनिंग आंसर इज 14,994. अब लास्ट मेथड है स्लैब रेट्स. स्लैब रेट आप लोग को तीनों का जीएसटी अलग से या वैल्यू पहले डिटरमाइन कर लो तीनों का, फिर जीएसटी एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. बट ऐसा नहीं कि तीनों को कंबाइन करके आप एक ही स्लैब रेट लगाओ, नहीं. वैल्यू तो सबका अलग से फाइंड करना मैंडेटरी है. ओके. Slab rate $1,000 at 85. So amount exchanged is 85,000. So 85,000 into 1%, value will come to 850. B, amount exchanged is 9,80,000. 9,80,000 का कैसे कंप्यूटेशन होगा? तो फर्स्ट 1,000 प्लस 0.5% of 8.8 lakhs. तो ये कितना आया? 5,400. Thank you. And C, amount exchanged is 72 lakh. 72 lakhs. So 72 lakhs के लिए it will be 5,500 plus 0.1% into 62 lakhs, 11,700. अब इसको टोटल कर सकते हैं. वैल्यू विल बी अमाउंट एक्सचेंज इज ओनली 85,000. $1,000 एक्सचेंज कर रहे हो 85 रुपीज में. कहां से 85 लाख आ जाएगा? 17,950 GST at 18%. नहीं, last 1 hour ना on Sunday class anything is permitted. 3231. 3231. Are you clear? Correct. Good. Go ahead, solve question number 1 and question number 2 on page 79. Question number 1, question number 2. अब फर्स्ट ऑप्शन कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो रूल 32 से नहीं आता है. वो सेक्शन 15 जो आपने कमीशन चार्ज किया, कमीशन पे जीएसटी लगता है. कब पढ़े थे सर? सप्लाई चैप्टर में. क्वेश्चन नंबर 1 देखा? एयर ट्रैवल एजेंट. गुड. करेक्ट. एक ऑप्शन तो होगा कमीशन पे डायरेक्टली पे कर दो 12%, विच इज 60,000. दूसरा ऑप्शन है यू गो बाय रूल 32. रूल 32 में यहाँ 5% 2.5 लाख, यहाँ इंटरनेशनल बुकिंग के लिए 10% 8 लाख, ये 10.5 लाख इंटू 12% विच कम्स टू 1,26,000.
Hey, are you clear? Yes. Okay, can you see Deepak Life Insurance and just identify कितने परसेंटेज पे टैक्स लगेगा? क्या अमाउंट्स दिया हुआ है ना, कितने अमाउंट्स पे टैक्स लगेगा? खाली वैल्यू चाहिए, फिर तो 18% मल्टीप्लाई करना है सिर्फ. कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 2 एंड टेल मी द आंसर? गुड. ओके, रिस्क पॉलिसीज पे क्या पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगेगा? हाँ. इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जहां 90% इज इन्वेस्टेड, कितने पे लगेगा? सर 10% पे लगेगा. थैंक यू सो मच. Other investment policies issued during the year. During the year is first year premium or subsequent year premium? फर्स्ट ईयर प्रीमियम तो 25% पे लगेगा. रिन्यूअल प्रीमियम ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज इशूड ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स 12.5%. And what about single premium annuity policy? 10%. Are you clear with this? Yes. Okay. ये दोनों आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे. 1147 500. सो अभी क्या सर, अभी मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस है. लेट्स सी हाउ मच यू रिकॉल. अब तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग. देखे क्या तुम लोग कितना कुछ पढ़ चुके हैं अभी? वी हैव रेड सप्लाई, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यूएशन. वैल्यूएशन में वी हैव कवर्ड सो मेनी प्रोविजंस. अब देखते हैं कितना याद है. ओके. ओके, इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन जीएसटी? थोड़ा वीडियो ऑन कर लो. नो. इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन कॉम्पेंसेशन सेस? नो. इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन टीसीएस? नो. What about other taxes? Yes. Incidental or ancillary charges? Yes. Third party payment? Yes. Something which is given free of cost, which was obligation of recipient. Recipient gave free of cost and recipient का obligation था. नहीं नहीं नहीं, ये रेसिपिएंट का ऑब्लिगेशन है, वो फ्री दे रहा है तो नहीं लगेगा. पर अगर वो सप्लायर का ऑब्लिगेशन था और रेसिपिएंट फ्री में दे रहा है, हाँ, देन इट इज एज गुड एज कंसिडरेशन. इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन? यस. व्हाट अबाउट अदर सब्सिडी? यस. गवर्नमेंट सब्सिडी? नो. If it subsidy is not linked to the price of the goods or services, randomly कुछ amount मिल रहा है, then in that case no, because that is anyways not liable to GST. Free supply discount क्या हम लोग remove करते हैं, exclude करते हैं? हाँ, remove करते हैं.
पोस्ट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. यस, एक्सक्लूड करते एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इफ रेसिपिएंट हैज रिवर्स्ड आईटीसी. ठीक है, पोस्ट नॉट नोन कुछ नहीं करना है. दी जीएसटी चार्ज इनिशियली विल रिमेन एज इट इज. याद करो रूल 27 क्या था सर? कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी. व्हाट आर दी? पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मनी प्लस नॉन मनी इन मनी. ओके, देन लाइक काइंड एंड क्वालिटी, फिर कॉस्ट प्लस 10% एंड रीजनेबल मीन्स. और सर्विसेज का आपको याद है, यू कैन यूज रीजनेबल मीन्स बिफोर अप्लाइंग कॉस्ट प्लस 10%. फिर रूल 28 वॉज फॉर, किसके लिए था सर रूल 28? रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. अब अदर देन एजेंट, एजेंट रूल 29 अलग से है. रूल 28 में पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू, फिर लाइक काइंड एंड क्वालिटी, फिर कॉस्ट प्लस 10%, रीजनेबल मीन्स. बट अगर रेसिपिएंट फुल आईटीसी ले सकता है तो कुछ टेंशन ही नहीं लेना है. whatever is charged and invoice is deemed to be value. क्या इसका भी कोई एक्सेप्शन है कि फुल आईटीसी ले सकता है तो भी इनवॉइस वाले एक्सेप्ट नहीं होगा? हाँ, कॉर्पोरेट गारंटी. कॉर्पोरेट गारंटी में वैल्यू विल बी 1% ऑफ, क्या था सर? 1% ऑफ guaranteed अमाउंट और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर. ठीक है, पर्सनल गारंटी जो डायरेक्टर दे रहा है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि वो सप्लाई नहीं है या वैल्यू जीरो है? सप्लाई है बट वैल्यू उसका जीरो हो जाएगा बिकॉज आरबीआई हैज सेड यू कांट चार्ज कंसिडरेशन फ्रॉम द कंपनी फॉर दिस. पर अगर कंसिडरेशन चार्ज कर दिया था तो हाँ, तो अगर चार्ज कर दिया तो आरबीआई पकड़ेगा प्लस जीएसटी भी पे करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट बिलीव इन लीगल इलीगल. हम लोग को टैक्स चाहिए खाली. क्या रिलेटेड पर्सन के पास और एक मेथड है कि कुछ और पे भी वो पे कर सकता है? 90% of the price at which recipient is making further supply. फिर एजेंट, एजेंट के पास क्या मेथड था? ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस एट विच एजेंट इज सप्लाइंग टू कस्टमर्स. और ये याद रखना, प्रिंसिपल एजेंट शेड्यूल 1 वाला एजेंट है. फिर कॉस्ट प्लस 10% और रीजनेबल मीन्स तो सेम है. 31A, बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग. बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग 100% ऑफ द बेट अमाउंट. और लॉटरी, लॉटरी में एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है, फेस वैल्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय 128 इंक्लूसिव ट्रीट करेंगे, और प्राइस नोटिफाइड इनटू 100 डिवाइडेड बाय 128 विच एवर इज हायर. सो दैट्स व्हाट दे हैव सेड. उसके बाद रूल 32 में गए थे, एयर ट्रैवल एजेंट. कुछ याद है क्या? अभी जस्ट किया. डोमेस्टिक बुकिंग्स 5%, इंटरनेशनल बुकिंग्स 10%. मनी चेंजिंग सर्विसेज, इफ one of them is INR and RBI reference rate is available, difference between RBI and transaction rate into number of units of foreign currency. When none of the currencies is INR, convert both into INR, lower of the two into 1%. एंड आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो 1% ऑफ द अमाउंट एक्सचेंज. स्लैब रेट्स याद है? कौन सा? 0 to 1 lakh 1%, मिनिमम 250. 1 lakh to 10 lakh रहेगा तो 1000 प्लस 0.5%, एंड मोर देन 10 lakh रहेगा तो 5500 प्लस 0.1%, मैक्सिमम 60,000. लाइफ इंश्योरेंस रिस्क बेस्ड पॉलिसीज पूरा जीएसटी लग जाएगा. इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसीज अगर ब्रेकअप अवेलेबल है तो खाली रिस्क पोर्शन पे लगेगा, इन्वेस्टमेंट पोर्शन पे नहीं लगेगा. अगर ब्रेकअप नहीं है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम 25%, सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम 12.5%, एंड सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी
10%। टाइम अप हो गया है वैल्यूएशन रिवाइज करते करते। नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना, हम लोग सारा साथ में रिवाइज करेंगे। चलिए, हैप्पी बैलेंस संडे इफ एनी।